Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to quickly discuss all the key concepts that we need to know in P1 differentiation. So let's begin. First of all, we need to know the sequence of chords 𝗲𝗀 method. So for example, if you have a curve like this and you want to find the gradient at a particular point, let's say you want to find the gradient at this point A, which has coordinates 1 and 1. तो पहले हम क्या करते थे, O levels के अंदर we used to draw a tangent here and then estimate the gradient. एक इसमें idea ये use कर सकते हैं that we use a sequence of chords like this, that we have this point A here. We take another point of the curve, let's say this point B, and we find the gradient of AB. AB का gradient find कर ले. That turns out to be 5 here. मैंने एक point लिया B, उसके ऊपर corresponding value X और Y की आपके पास आ गई और आपने AB का gradient find कर लिया. ठीक है, AB का gradient आपके पास 5 आ गया, but then it's not a very good estimate. Why? Because A के ऊपर जो gradient है, जो tangent है, वो तो इस तरह का होना था. A के ऊपर जो tangent है, वो तो आपका तकरीबन ऐसे होना था. AB line की direction तो बिल्कुल different है, वो ज़्यादा steep है. हम क्या करते हैं, in order to improve our estimate, we take another point that is closer to A as compared to the point B. B से ज़्यादा close point आपने लिया A के. So you can take this point C for instance. आपने C point लिया, दोबारा से gradient find किया, it turned out to be 4. And then what you do is you just keep getting closer and closer to that point A. आपने उससे ज़्यादा close points लेना शुरू कर दिए. You take this point D point लिया, यहाँ पे coordinates 2 and 4 हैं, उसके ऊपर आपको AD का gradient आपके पास आ गया 3. You took another point that's even closer to A, point E, point F. इन सब पे आपने क्या किया, इनके gradients find किए with the line joining these points with A. तो आप देखें sequence क्या बन रहा है. You started from 5, 4, 3, 2.1, 2.01. तो आप देखो कि values किसको approach कर रही है. So it's pretty obvious from here. आपकी values 2 को approach कर रही है. So the gradient at the point A should be 2 here, right? So that's the method that we need to know about for estimating gradients of a curve, gradient of a curve at a particular point like this. Okay, so that's one thing. Now let's discuss a formal method of finding gradients of curves, which is called differentiation. Differentiation we use to find gradient of any type of graph. In P1 differentiation, we only have functions that have this power. We only have power functions like this. The first type of function we have is kx raised to power n. So we could have something like this. For instance, we have y equals 4x raised to power 3. इसको differentiate किस तरह से करते हैं? There are two things that we have to do for this. You multiply by the power. जब n आपके पास power आ रही है, उससे multiply कर देते हैं, वो नीचे आकर multiply हो जाता है यहाँ पे, and then you subtract 1 from the power में से 1 minus कर देते हैं, it becomes n minus 1. So in this case, for instance, 4x cube का derivative क्या हो जाएगा? It's going to be dy over dx equals 4 into 3, power से multiply कर दिया, into x raised to power 3 minus 1, 3 में से 1 minus किया, we get 2 from that, and the derivative turns out to be 12x squared. So you need to know about this rule. Then there are a couple of other rules that are derived from this. वो basically इसी से आ रहे होते हैं. अगर आपके पास कुछ भी इस तरह का लिखा हुआ है, sum constant into x, तो इसका derivative सिर्फ क्या हो जाता है, वो जो constant होता है. For example, if you have y equals minus 5x, the derivative of that is simply minus 5. Okay, जो number लिखा होता है वो आपका derivative होता है. And then if you have y equals k, so basically k is a constant. If you have any constant like this, let's say y equals 4, the derivative of a constant is always equal to 0. Constant का derivative, अगर वो किसी चीज का multiply ये divide नहीं हो रहा, सिर्फ एक standalone constant है, उसका derivative हमेशा 0 होता है. Okay, so that's what we need to know about. Now there's a more general form of that power rule. ऊपर तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे x की power थी, but then we could actually have anything in terms of x. X की terms में कुछ भी हो सकता है और उसके ऊपर कोई power है, तो उसको किस तरह से differentiate करते हैं? This is the general rule that we've got for that. There are 3 things that we're going to do here. We multiply by the power, n आके नीचे multiply हो जाएगा. We subtract 1 from the power, so we have n here, multiply by the power, subtract 1 from the power, and then you multiply by the derivative of what is inside the power. जो power की base है, उसके derivative से आपको multiply भी करना होता है. Okay, ये 3 चीजें आपको करनी होती है, and that's the general power rule that we have to know about in this topic. Now let's have a look at a few examples of this. Let's say you got something like this.
2x plus 1 whole raised to power 4. We want to differentiate this. क्या करेंगे? It's the power form. You multiply by the power. 4 से multiply कर दिया. Whatever is inside the brackets, that remains as it is. You subtract 1 from the power. 4 में से 1 minus कर दिया. And then you multiply by the derivative of what is inside the power, the base है, उसके derivative से multiply कर दिया. 2x plus 1 का derivative is 2. You multiply by that, then you can simplify this. You end up with this derivative. Let's take another example. Let's say you've got something like this, where you have a fraction in the power, minus 3 into this whole thing. The constant that's being multiplied outside, that remains as it is. जो multiply हो रहा था constant, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है. Multiply by the power आके नीचे multiply हो जाएगी 2/3. You've got that here. You subtract 1 from the power, 2/3 minus 1. That's going to give you minus 1/3. जो भी अंदर था वो वैसे ही रहा. Power में से 1 minus कर दिया. It becomes minus 1/3. And then whatever was inside the brackets here, जो power के नीचे आ रहा था, उसके derivative से multiply कर देंगे. What does that turn out to be? 2x squared plus 5x का derivative is 4x plus 5. उससे multiply कर दिया. And then you can simplify that. That's going to give you the derivative. Okay, let's take another example. If you have something like this, now this is not something that is in the power form right now. What you can do is you can convert it to the power form first. आप क्या कर सकते हो? ये denominator को पहले ऊपर ले आओ. Power is going to be negative 1/2. Why? Because it's a square root, so 1/2 power थी. जब numerator में आएगा, minus 1/2 हो जाएगा, and it looks like this. And now it's the form that we know how to differentiate. The constant outside, that's going to remain as it is. The power gets multiplied here. You subtract 1 from the power, minus 1/2, so 1 minus कर दिया. You get this. And then you multiply by the derivative of what is inside the power here. इसके derivative से multiply करेंगे. इसका derivative क्या हो जाएगा? 3x squared plus 7 का derivative. 3x squared का derivative is 6x. So that's what we've got here. 7 का derivative 0 है, तो वो हमने ignore कर दिया. This is what the derivative turns out to be. You can simplify this and we end up with this result at the end. Okay, so this is what we need to know about in terms of differentiating functions in paper 1. Okay, now what applications does it have? You can use differentiation to find equations of tangents and normals. And that's one thing that we can do using this. So let's say you have to find the equation of a tangent at a particular point. You've got this curve y equals x cubed plus 3. You've got this point here, point A point के ऊपर. What you want is you want to find the equation of the tangent. Tangent क्या होता है? It's a line that is parallel to the curve at this point. Just उस point पे सिर्फ touch कर रही है उसको. और वो उसकी डायरेक्शन जो है वो कर्व की डायरेक्शन के सेम है. इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. सिमिलरली आपके पास एक नॉर्मल होता है. नॉर्मल इज a line that is perpendicular to the curve at that point. Tangent के और curve के दोनों के perpendicular है ये line. इसको हम normal कहते हैं. इन दोनों की equation find कर सकते हैं using differentiation. How do you do that? Both of them are straight lines. We need two things to find equations of straight lines. One is the gradient and the other is a point. Point तो आपको पता है. ये point आपका A14 आ गया. ठीक है. Tangent का जो gradient होता है, that is going to be equal to the gradient of the curve at that point, right? Because curve, tangent by definition is a line that has the same direction as the direction of the curve. तो जो tangent का gradient होगा, वो curve के gradient के equal होगा. तो आप क्या करोगे? आप curve के gradient find कर लोगे इस point के ऊपर. कैसे? Using differentiation. We'll see that in a moment. And then the gradient of the tangent is going to be exactly the same. Okay. What about the normal? Normal का जो gradient होता है, that is, since normal is perpendicular to the curve at that point, the gradient of the normal is negative reciprocal of the gradient of the curve at that point. Normal के लिए आप क्या करते हो? Negative reciprocal ले लेते हो of the gradient to the curve. Let's take an example. Let's say we've got that same curve, y equals x cubed plus 3. इसके derivative हमारे पास क्या आ गया? 3x square. Why do we need to do that? Because we're looking for gradient. Derivative आपका gradient represent कर रहा होता है. 3x square आपका डेरिवेटिव आ गया. अब किस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट चाहिए? पॉइंट A के ऊपर. तो पॉइंट A के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट इज 1. You input x equals 1 in this derivative and that is going to give you the gradient at that point A, and that turns out to be 3. अब 3 आपका ग्रेडियंट है उस कर्व का उस पॉइंट के ऊपर. तो इसका क्या मतलब है? आपके टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा that is also going to be 3. So you've got
the gradient 3 of a straight line, you've got a point on that line. आप इसकी equation लिख सकते हो, y minus y1 equals m into x minus x1 use करके. You can find the equation of the tangent like that. What about the equation of the normal? Normal का gradient क्या आएगा? You've got the gradient of the curve, that is 3. Normal का gradient इसका negative reciprocal होगा, and that's going to be minus 1 over 3. And again, you've got the same point A के ऊपर आपको normal find करना था. You've got the point, you've got a gradient, you've got the gradient. Again, you can use this form, y minus y1 equals m into x minus x1, and that is going to give you the equation of the normal as well. All right, so that's how you find equations of tangents and normals using differentiation. Okay, then you can have, you may have to use it to find increasing and decreasing functions. So basically, you can prove whether a function is increasing or decreasing using differentiation. Or sometimes you're given that the function is increasing or decreasing, उसमें भी आप use कर सकते हो. So the idea is, increasing functions क्या होते हैं? Increasing functions वो होते हैं जो left से right अगर आप देखें, they go upwards like this. ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, right? ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? उनका gradient positive होता है. और कर्व्स में gradient, या इनफैक्ट किसी भी ग्राफ में gradient represent क्या कर रहा होता है? कि कहाँ से आता है gradient? Derivative basically represents the gradient. So increasing functions के अंदर आपका gradient positive होता है, and that implies that the derivative should be positive. In decreasing functions, since the gradient is negative, they are going downwards like this. वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, like this curve. For decreasing functions, the gradient is negative, and that implies that the derivative is also negative. So you've got to use this fact sometimes. So for example, let's say you've got this function y equals 1 over x cubed minus x cubed. We have to show that f is a decreasing function. Decreasing function का क्या मतलब है? Derivative आपने prove करना है कि वो negative है. How do you do that? You can find the derivative, पहले इसको power form में convert कर दे. 1 over x cube है, इसको x को ऊपर ले आएंगे, x power 1 over 3 हो, x power minus 3 हो गया. Then you differentiate it, आपने differentiate कर लिया, derivative आ गया आपके पास. This is what the derivative looks like. And now you think about it. आपने prove करना है कि decreasing function है. Decreasing function का मतलब ये है कि आपने prove करना है ये हमेशा negative है. How do you do that? What you can do is you can actually take negative common outside, like we've done here. Negative आपने common ले लिया भाई. अंदर क्या बचा? 3 over x raised to the power 4 plus 3x square. अब ये अंदर वाला part तो हमेशा positive है. Why? Because we've got even powers. X power 4 even power है, ये हमेशा positive होगी. No matter what the value of x is. यहाँ पे in fact इसने बताया भी x की value positive है. तो in any case ये positive ही होना था. 3x square भी positive है. तो अंदर वाला पूरा bracket positive है. और फिर बाहर आपके पास minus लगा हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो पूरी expression है that is negative. So your derivative is negative. Since the derivative is negative, that means f of x is a decreasing function. Similarly, आप prove कर सकते हो with sometimes a function is an increasing function and sometimes it's neither. जब वो positive भी नहीं हो, negative भी नहीं हो, दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो आप क्या कहते हो? It's neither increasing nor decreasing. So you also have to know about that. Okay, next we've got stationary points and their nature. Stationary points क्या होते हैं? हमने quadratics के अंदर भी देखा हुआ है. Turning point जो होता है graph का, minimum point, maximum point, हम इसको vertex भी कहते होते थे. Now we've got another name for this, and that is called a stationary point. अब stationary point या turning point हम differentiation को use करके भी कर सकते हैं. The idea is at the turning point or at the stationary point, the gradient is always 0, right? Because यहाँ पे अगर आप tangent बनाते हो, it's going to be a horizontal line like this, right? So आपको gradient 0 होता है stationary point के ऊपर. So differentiation use करके हम कैसे point find कर सकते हैं? क्योंकि gradient और gradient आपका कहाँ से आता है? Derivative of function से. आप क्या कर सकते हो? अपने stationary point find करना हो, for example, you've got this curve. It's a cubic curve. You differentiate it. Differentiate करके you put that derivative equal to 0. Why? Because you want the gradient to be equal to 0 करना है, derivative find करना है, just equate कर देना है, and that's going to give you some values of x. हमने यहाँ पे किया, we found the values of x, 2 stationary points of this curve, उनके x coordinates. Corresponding y coordinates कैसे find कर सकते हैं? You can input these values of x back in the original curve. उसमें जाके input कर दें, आपके पास corresponding values of y आ जाएंगी. जब वो आपके पास आ गई, you get these
टर्निंग पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पे आपका ग्राफ जो है वो टर्न कर रहा है. ओके, these are called stationary points. Now you also have to figure out whether these points are maximum or are they like this. इन दोनों में से कौन सा केस है, ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है. Which of these two cases is it going to be? How do you figure that out? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करते हैं. ओके, सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आ जाए तो आपका पॉइंट मिनिमम पॉइंट होता है. अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है. ओके, सो लेट्स अप्लाई दैट इन दिस केस. dy और dx हमने फाइंड कर लिया था पहले. सेकंड डेरिवेटिव का मतलब आपने इसको एक दफा और डिफरेंशिएट कर लेना है. d 2y over dx squared, this is the notation that we have. क्या आ गया, 2x minus 7. So we have 2x minus 7, that's the second derivative. Now it's in terms of x, we can't know for now कि ये positive है या negative है. आप क्या करेंगे, जो stationary points आपने निकाले थे, आपने ये 2 stationary points निकाले थे, that you can see here, ये stationary points 2 निकाले थे, इन दोनों points को आप input कर दें इसमें 1 by 1. Again आपके पास यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है, तो x की values यहाँ पे input कर दें. एक x equals 3 है, दूसरा x equals 4 है. तो ये एक से आपका second derivative -1 आ जाता है, एक से +1 आ जाता है. When the second derivative is negative, that means you've got a maximum point. When the second derivative is 8.5 के ऊपर आपका maximum point है और 48.33 के ऊपर आपका minimum point है. Right? That's how you can find the nature of stationary points or minimum value of a gradient. So basically gradient की maximum या minimum value आपसे पूछ रहे हैं. So for instance, let's say they give you a curve like this, dy over dx. They give you a curve like this, y equals 5 into 4x plus 2 whole raised to power 3. आपको curve दी, आपसे कहते हैं इस curve में जो gradient, इस curve का जो gradient होगा वो, how do you do that? If you were to define the derivative of इसका डेरिवेटिव, इनपुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये आप नहीं करना क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कर्व की नहीं चाहिए, ग्रेडियंट की चाहिए. तो आप क्या करोगे, ग्रेडियंट क्या होता है, डेरिवेटिव आपको ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से दिस डेरिवेटिव दैट यू फिगर्ड आउट, दिस इज योर ग्रेडियंट फंक्शन. ये आपका ग्रेडियंट फंक्शन आ गया बेसिकली. इसको आप किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर दें. सो दैट्स हाउ आई रिकमेंड इट, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि उसको दोबारा को डिफरेंशिएट करें. बेसिकली दिस इज द ग्रेडियंट. नाउ ये आपका ग्रेडियंट का फंक्शन आ गया, जो dy और dx था, इसको आपने किसी और लेटर से डिनोट कर दिया, जैसे दिस इज योर ग्रेडियंट फंक्शन. ओके, अब इस ग्रेडियंट की आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फिगर आउट करनी है. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिफाइन द डेरिवेटिव एंड पुट दैट इक्वल टू 0. अब इस ग्रेडियंट फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन आपके पास है g फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, उसको 0 से इक्वेट कर दें. So that's what we do here. अब वो कर लेंगे, you put that equal to 0, you'll find a value of x की आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी. If you want to find the corresponding maximum or minimum value of the gradient, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, आप वापस इस gradient फंक्शन के अंदर इनपुट कर देंगे, आपके पास वो वैल्यू भी आ जाएगी. ठीक है, मोस्टली इसने पूछा होता है x की वैल्यू, तो आप वो यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो. अगर ग्रेडियंट पूछा हो तो आप वापस इसके अंदर इनपुट कर दोगे, you get the corresponding value for the gradient as well from that. Okay, all right. Next, you have to use rates of change and chain rule. Sometimes rate of change क्या होता है, you could have any sort of variable, उसका rate of change उसने पूछा होगा. Rate of change हमेशा with respect to time हम लिया करेंगे. यहाँ पे let's say वो कहते हैं rate of change of volume, उसका हम derivative के terms में कैसे लिख सकते हैं, we say this is dv over dt. Right, derivative terms में rate of change of volume कैसे लिखेंगे, dv over dt. Similarly, rate of change of height, इसको derivative terms में किस तरह लिखेंगे, say if height is being represented by h, rate of change of height is going to be dh over dt. ठीक है, ये notation आपको पता होनी चाहिए. Now this is going to be used in combination with chain rule, and this is how the chain rule looks like. If you've got 3 variables x, y and t,
उसमें उसने आपको कुछ बता दिया, उसने आपको बता दिया कि dx over dt उसने आपको बताया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, या उसने बताया हुआ है आपको फाइंड करना है dy over dx, ये आपको फिगर आउट करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। dy over dx, सॉरी dy over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y फाइंड करना है, dy over dt आपको फिगर आउट करना है। नाउ हाउ कैन यू डू दैट? आपके पास y और x में कोई रिलेशनशिप होगा, y और x में कोई रिलेशनशिप होगा, कुछ भी हो सकता है वो। y would be a function of x, y x की नजर में कुछ आ रहा होगा, उसका आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसका कुछ dy over dx आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सिंपली ये चेन रूल यूज करना है। चेन रूल कैसे वर्क करता है? आपने dy over dt फाइंड करना है, dy over dt, what you're going to do is you're going to put dy here as the numerator of the first fraction, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, that's going to be the denominator of the second fraction, और दरमियान में आपका जो भी थर्ड वेरिएबल है वो आ जाएगा। यहाँ पे कौन से 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास? x, y and d। व्हाट्स द थर्ड वेरिएबल? x। दरमियान में आपके पास यहाँ पे x आ गया, dx, और यहाँ पे x आ गया, ठीक है। So this, using this you can find the value of, using this you can find the value of dy over dt, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप x और y की वैल्यूज इनपुट कर देंगे उसके अंदर। यू गॉट टू बी अवेयर दैट समटाइम्स आपके पास यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर आपने dy over dx फाइंड करना होता, आपके पास इस फॉर्मूला के अंदर dt over dx आ रहा है, अगर आपके पास dx over dt उसने बताया हुआ है, लेट्स से दैट इज 0.5, तो dt over dx क्या हो जाएगा? That's going to be reciprocal of that, 1 over 0.5 कर देंगे, that turns out to be 2। तो अगर वो reciprocal है उसका, तो जो उसने दिया होगा उसको reciprocal कर लिया करेंगे, ठीक है। So this is another thing that you need to know about chain rule और rate of change, ये आपको पता होना चाहिए, ये यूज करना आना चाहिए। Let's move on. Finally, in the rate of change questions, you will a lot of times have to prove something in the first part। वो mensuration के कुछ questions होंगे, O level वाले concepts है वैसे तो सारे, but you have to know these formulas in case you've forgotten। इनमें से कुछ formula sheet में दिए होते हैं, cone, pyramid, prism, ये आपको formula sheet में दिया, no, not prism, cone, pyramid and sphere, these are given in the formula sheet। But the first few cube, cuboid, cylinder, prism, ये formulas formula sheet में नहीं दिए होते। ये 3D mensuration वाले सारे formulas अक्सर यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं in paper 1 differentiation, so you have to know about these formulas as well। These are all the formulas, their volumes and surface areas, ठीक है। So that's P1 differentiation। I hope this was helpful। If you like this video, make sure that you subscribe to the channel and also share with others who you think might find this helpful। I'll see you again in another video. Allah Hafiz.